क्या आज तक इंसान ने हज़ारों साल हो गए हैं कभी देखा है कि सूरज ज़र्रा बराबर भी अपने ऑर्बिट से राइट हुआ हो या लेफ्ट हुआ हो? नेवर। और जब तक क़यामत नहीं आएगी, अल्लाह ताला की परमिशन नहीं होगी ना उनके, तब तक ये हिलेगा नहीं। बोलते हैं डेली सूरज निकलता है सुबह, जब घूम रहा होता है ना, इंसान को आवाज़ें दे रहा होता है, ए इंसान तू अपने आप को देख और मुझे देख, तू अपना साइज़ देख, तेरा क्या साइज़ है, 6 फुट 5 फुट 4 फुट, और हाउ बिग आई एम, मैं इतना बड़ा होते हुए भी अपने रब की ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करता। लुक एट यू मैन, हाउ डेयर यू, वाह इट्स सो डीप ब्रो। आई वाज थिंकिंग यार, अच्छा ये एक मिसाल है ब्रो, एवरीथिंग व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, यू टॉक अबाउट स्टार्स, अर्थ, मून, यार हर शय अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। आई वाज थिंकिंग, आई वाज सो ब्लोन अवे। साइंस देखें आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन जो है तरक्की कर रही है। नाउ द साइंस हैज़ कम टू नो दैट यू नो फिश ऑल्सो यू नो दे अटर वर्ड्स, वो थोड़ी सी बीट्स बीप आवाज़ें आ रही थी। तो अब भाई मुझे पता चला कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हर शय जो है ना, लहू अस्समावातु सबउ वल अर्दु वमन फीहिन। यार इट इज़ सो डीप ब्रो कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है सातों आसमान हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दे आर ओबेइंग इट। वल अर्दु वमन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई चीज़ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना बयान करती है, लेकिन है इंसान तुझे समझ में नहीं आता। यार साइंस में जो अल्लाह ताला ने प्रोग्रेशन और एडवांसमेंट इंसान को दी है ना, मुझे ये लगता है वो भी इसलिए दिया ताकि हम ना अल्लाह ताला के उस तक पहुंच सकें। यू नो, द मोर यू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यू रियलाइज़ कि ये दुनिया पहले कितनी छोटी है, और इस आपको लगता है कि जो ऑर्बिट्स हैं और ये जो स्टार्स घूम रहे हैं जो करीब तरीन हैं, शायद यही यूनिवर्स है। देन यू गो आउट फर्दर तो लगता है कि ये तो खुद एक स्पेक है आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और यू कीप जूमिंग आउट और आपको लगता है कि यार दिस इज़ अ नेवर एंडिंग ब्लैक स्पेस, यू नो, और इट्स एक्सपेंडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अगर इसको टोटलिटी में आप देखें ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इट्स लाइक अ बल्ब, एक बल्ब का साइज जो है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इट इज़ 93 बिलियन लाइट ईयर्स। 93 बिलियन लाइट ईयर्स इज़ ओनली द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके बियॉन्ड क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ वेयर, दिस इज़ द फर्स्ट हेवन ब्रो, दिस इज द फर्स्ट। थोड़ा सा ना हमें एक्चुअली ना इसको डाइजेस्ट करने दें। ही इज टॉकिंग अबाउट 93 बिलियन लाइट ईयर्स। 93 बिलियन ईयर्स के लिए लाइट ट्रैवल करते जा रही है थकने के बगैर। यार वल्लाही ऐसी नहीं, not millions, not 93 years, and it's not simple years, it is light year man. मैं यकीन करें, you know it feels like not exaggerating, जब ऐसी आयात सुनते हैं ना, ये चीज़ें देखते हैं, वल्लाही एक चीज़ बस करने को दिल करता है, अपना जो माथा है ना वल्लाही ज़मीन पे रख दो बस। This is the best we can do. What do I think, you know, ये जो डिस्टेंस है जो इतना ज़्यादा है, ज़रा ये 1 मिनट के लिए सोचें कि हदीस में आता है कि आसमान पर कोई 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्लाह का कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ ना हो। मा फ़ीहा मौदिअ 4 असाबि इल्ला व मलकुन साजिदुन लिल्लाहि तआला। So this is such a big heaven, और यहाँ पे कितने फरिश्ते होंगे यार, और अल्लाह ताला की बात। और ये दिस इज फर्स्ट हेवन, एंड देन द सेकंड हेवन व्हिच इज लाइक, इफ यू डू द कंपैरिजन, फर्स्ट टू सेकंड इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट, you know, and the second to third is like a ring in a desert, and all of the 7 heavens as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. Allahu Akbar. How big Allah subhanahu wa ta'ala is and how little we are. And then he sent his kalam to us very little, you know, we are speck on a speck on a speck, yeah, subhanallah, we are non-existent basically. yes, we don't लेकिन फिर भी वो बुलाए hayya ala salah और हम ना जाएं, हमारी जुर्रत। hayya ala salah फिर भी वो पुकारे कि मेरे बंदे है कोई मांगने वाला, मैं दुआ कबूल करूँ रात के तीसरे हिस्से में, और हम सोते रहें। वो कहे कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, मगर हम सोते रहें। इफ़ यू हैव दिस फीलिंग ना कि जिस रब के बारे में ये सब बात कर रहे हैं और सब ये है, वो मेरी बैक पे है,
मुझसे मोहब्बत करता है, अल्टीमेटली मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने बेशक कमी, और वो मुझे ना बेशक मैं बागी बन के रहा हूँ, लेकिन ही इज़ 1 सेकंड अवे फ्रॉम मी। मेरे एक आंसू की देर है। पूरे जो है ना आसमान और ज़मीन की जो पानी है ना, वो जहन्नम को नहीं बुझा सकता, मगर मेरे आँख का एक आंसू जहन्नम को बुझा सकता है, यानी मेरी जहन्नम है मुझे बुझा सकता है। सो यू आर अ सेकंड डिस्टेंस अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आंखों से आंसू बहाएं और अपने रब को राज़ी कर लें और पा लें उसको, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्या The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is 1 star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is 1 star. 1 star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make 1 galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend, after this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah
has given, has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the kursi and the arsh is the desert. What is the kursi in comparison to the arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the arsh al-kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم